Namaste friends, greetings of the day. Myself Prasad Joshi. Currently I am working as an assistant professor at MVP's KBTCOE College of Engineering Nasik, and I welcome all of you for a session on delta connection three-phase systems. Okay, so in previous session we have understood star connection of three-phase system. In this session we are going to understand delta connection of three-phase system. So today's agenda is we are going to cover what is delta connection, what is relationship between line voltage and phase voltage for delta connection, derivation for relationship between line current and phase current, then types of powers and power triangle, and then at the end we are going to understand examples based on three-phase delta connected balance load. Now my humble request to all of you is, if you have not watched video based on fundamentals of three-phase system and video based on star connected three-phase system, then please go back and watch those videos because they are prerequisite for these videos. If you have seen that videos and if you have noted the contents mentioned in those two videos, then and then only you will be able to understand what is delta connection and what are the points which we are covering, that only you will understand if you have watched previous videos. Okay, so my humble request is go back to my channel, see the two videos and then come back and see this video. Now let's start with the delta connection. So delta connection is formed by connecting end point of one phase to the starting point of other. Likewise, you will see here R dash is R phase. So R dash is connected to Y dash is Y phase, Y dash is connected to B, and B dash is B phase, B dash is connected to R. So like a triangle is formed by connecting end point of one side to the starting point of other side. In same way, delta connection is formed and it looks like a delta and hence it is called as delta connection. So it is formed by connecting end point of one phase to the starting point of the other. Now next thing is, you should be able to draw a circuit diagram for the delta connection. So this slide gives us detailing of the circuit diagram for the delta connection. On left hand side of the circuit, you will find there is three-phase supply. So RYB are supply terminals. RYB stands for red, yellow, blue, and our standard phase sequence is RYB. So we have drawn the supply terminals like RYB. On the right hand side of the phasor of the circuit diagram, you will find the delta connected load, wherein R dash is R phase, R dash is connected to Y dash is Y phase, and B dash is B phase. So R dash is connected to Y dash is connected to B, and B dash is connected to R. So on the right hand side of the circuit you will find delta connected load, whereas on the left hand side you will find the supply terminals. Now what we do is we connect supply to the load by using lines. So this is R line, okay, which is connecting supply R to the load R. Then we are having this Y line which connects supply Y to the load Y, and then we are having this B line which connects supply B to the load B. Okay, so the current which is flowing through line is called as line current, and hence we will find here there are three line currents: IR in R line, IY in Y line, and IB in B line. So these are three line currents. Okay, then alongside the load you will find we have shown phase current. So there are three phase current IRY. If you see the connection of load, we have shown three phase currents. Okay, so current IRY is phase current of R phase. So it is flowing from R towards Y. Okay, on the top we are having this R and here we are having Y. So current which flows from R towards Y is called as IRY. The current which flows from Y towards B is called as IYB. So this current, and the current which flows from B towards R is called as IBR. So this is how you need to remember the phase current. Okay, phase current आपको कैसे लिखना है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट की तरफ जा रहा है उसके अनुसार आपको फेज करंट लिखना है. जैसे आर फेज का जो फेज करंट है वो आर से वाई की तरफ फ्लो हो रहा है. दिस इज योर आर टर्मिनल एंड दिस इज योर वाई टर्मिनल. So it is flowing from R towards Y, so it is IRY. The other second one is flowing from Y towards B, so it is IYB, and the third is flowing from B towards R, so it is IBR. So these are three phase currents. Okay, and these are on the from the supply side towards the load are called as line current. Now in case of star connection we have seen that line current was equal to phase current because there was no other path for the flow of current. Whatever current was flowing through line, same current was flowing through phase. So we have written IL is equal to IPH. But here you will find, suppose we consider this current IR, then IR current will come from the supply. Okay, and here it is having two paths for the flow. Okay, so IR current is going to get divided
Okay, IR current is going to get divided, and hence value of phase current will be less than line current by common sense. But by how much amount, that we want to determine by deriving a relationship. So here we need to verify the relationship IL is equal to root 3 IPH. Okay, in case of star connection we had verified VL is equal to root 3 VPH. For delta connection we need to verify IL is equal to root 3 IPH. So this is what is your circuit diagram. So I have explained you line currents, I have explained you phase current. Now let's understand line voltage and phase voltage. So here you will find 3 voltmeters. VRY is voltmeter which is measuring line voltage or potential difference between R line and Y line. Second is VYB which is measuring potential difference between Y line and B line. And third is VBR which is measuring potential difference between B line and R line. Now these 3 are going to measure line voltages, but here I have shown one voltmeter which is connected across R phase. Okay, this voltmeter VRY is connected across R phase. Okay, but if you find, even though we are connecting it across R phase, ultimately you are connecting it between R and Y. So this is R of the load, and here you will find Y of the load. Okay, this one. So ultimately, even though it is connected across the phase, but it is going to measure VRY only. So here, as per delta connection, VL is equal to VPH, that is line voltage is equal to phase voltage. So star के लिए क्या था? Star के लिए था line current is equal to phase current and line voltage is root 3 times phase voltage. But for delta connection it is opposite. For delta connection, line current is root 3 times phase current, whereas line voltage is equal to phase voltage. So here we need to derive relationship between line current and phase current. Okay, so I hope you have understood this circuit diagram. Drawing a circuit diagram is very simple task. Most of the students get confused as they see lot of the parts in circuit diagram. They get fear out of it. Okay, so आपको डरना नहीं है इसमें. आपको पहले 3 सप्लाई टर्मिनल्स ड्रॉ करना है, फिर लोड कनेक्शन ड्रॉ करना है, and then you just need to connect supply to the load. Now in this circuit diagram, ammeter A1 जो है, this ammeter is going to measure line current. Okay, and the ammeter A2 here is going to measure phase current. Okay, so by common sense, reading of A2 will be less than reading of A1, but by how much amount, that is nothing but we need to verify IL is equal to root 3 IPH. So जो A1 का रीडिंग है, A1 एमीटर का जो रीडिंग है वो A2 एमीटर के रूट 3 टाइम होगा. Okay, reading of ammeter A1 will be root 3 times that of ammeter A2. Is that clear? So here below circuit diagram I have noted IR, IY, IB are line currents, IRY, IYB and IBR are phase currents, whereas VRY, VYB and VBR are line and phase voltages, because line voltage is equal to phase voltage. Okay, so now relationship between voltages is VL is equal to VPH. Keep this in mind. For delta connection, VL is equal to VPH. Now let's derive relationship between the currents. So for deriving relationship between the currents, first we need, then you will find there are 2 incoming current. R node की तरफ 2 currents आ रहे हैं. One current is this IR is coming towards R node. Second is IBR, this from downwards. From here it is coming upwards. So I'll just note here, from this side IR is coming, IBR is already here, and outgoing current is IRY. Okay, so we can write the equation of line currents in terms of phase current. IR जो है वो line current है आपका. Okay, और ये दोनों जो है IBR और IRY ये आपके phase currents है. So we are going to write equation of line current in terms of phase current. So if you see, by applying Kirchhoff's current law at node R, I can write, or we can write IR is equal to IR plus IBR, because IR and IBR are incoming. Okay, is equal to IRY because IRY is outgoing. For those who are not understanding, I'll draw it over here. Okay, ये आपका IRY आ रहा है सर्किट में. यहाँ पे आपका ऐसा सर्किट है, यहाँ पे इम्पीडेंसेस मैंने ड्रॉ किए थे. From here IBR is coming, IBR. Okay, and from here IRY is outgoing. Okay, I have just drawn a simple small part of the previous circuit. Okay, so from this we can say IR and IBR are incoming current. So IR plus IBR is equal to IRY because IRY is outgoing at this node. At this node KCL is applied.
Okay, so you just need to apply simple KCL and you need to note this equation, and all quantities are in phasors. Now as we want to derive relationship between line current and phase current, हम IR एक साइड पे रखेंगे और IRY और IBR दूसरे साइड पे लेके जाएंगे. So what we can write is, further we can write IR is equal to IRY minus IBR. So IBR, if it goes on that side, it will become minus. Okay, and then all of us know that IRY is current flowing through R phase. IRY is current flowing through R phase. So we are going to take into consideration basic equation of R phase voltage. Okay, so basic R phase voltage का equation क्या है? VR is equal to Vm sin omega t. This is equation of R phase voltage. So same is applicable for R phase current. Okay, और R phase का current क्या है? IRY. So equation of IRY will be IMPH sin omega t. Okay, so in polar form it will be IMPH angle 0, and in rectangular form it will be IMPH cos 0 plus j IMPH sin 0. ओके, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसके कर, यहाँ पे एक स्टेप मैंने डायरेक्टली कंक्लूड किया है. सो इसका आंसर क्या आएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में? IMPH cos 0 ओके प्लस j IMPH sin 0. Okay, so Im cos 0 is IMPH, whereas sin 0 is 0. So this is what you will get the equation. So IRY का equation आपको मिलेगा in rectangular form IMPH plus J0. Now once we have noted the equation of IRY in rectangular form, again we need to note equation of IBR also in rectangular form. So IBR का rectangular form में equation आएगा. So IBR is phase current of B phase. ओके, बी फेज का फेज करंट है, और बी फेज के वोल्टेज का इक्वेशन क्या है? वी बी, इफ यू रिमेंबर. ओके, वी आर, वी वाई, वी बी, these are three fundamental voltage equations which I have explained in the video of introduction to three phase AC systems. Okay, VR, VY, VB. So by using equation of VR हमने IRY का equation लिखा. Now by using equation of VB we are going to write equation of IB. So equation of VB is Vm sin omega t plus 120. ये इक्वेशन था VB का. ओके, दो पॉसिबल इक्वेशन थे VB के, आइदर Vm sin omega t minus 240 और Vm sin omega t plus 120. सो इसमें से मैंने Vm sin omega t plus 120 ये इक्वेशन मैंने रेफरेंस लिया, एंड देन आई हैव रिटन दिस इक्वेशन फॉर IBR. सो IBR इज IMPH sin omega t plus 120. Now again we are representing this IBR in polar form and then into rectangular form. So IBR का rectangular form क्या आएगा? IMPH cos 120 okay plus j IMPH sin 120. ये बीच का इधर का स्टेप है ये. ओके, मैंने डायरेक्टली लास्ट स्टेप लिखा है. सो cos 120 जो है, cos 120 इज माइनस 0.5 and sin 120 is 0.866. बस it is as simple as that. If you have applied Kirchhoff's voltage law properly at the node R, and if you know the equations of IRY and IBR, then this expression is very easy. Okay, so if your fundamentals are clear, if you have neatly noted fundamentals of three phase AC system, okay, इसके दो वीडियो, पहले वाला वीडियो जो था, okay, वो वीडियो के कंटेंट्स अगर आपने अच्छे से लिखे तो आपको इक्वेशन लिखने आएंगे. वंस यू राइट द इक्वेशन, कन्वर्ट देम इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू सब्सट्रैक्शन. फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वी यूज रेक्टेंगुलर फॉर्म. सो वंस यू राइट बोथ द इक्वेशंस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, जस्ट सब्स्टिट्यूट बोथ द इक्वेशंस इन इक्वेशन ऑफ IR का इक्वेशन है IRY माइनस IBR. सो उसके इक्वेशन में ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये इक्वेशन मिल जाता है. ओके, एंड देन सब्सट्रैक्ट रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट. ओके ओके, सो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे माइनस साइन आएगा, दैट आई थिंक देयर इज सम सिली मिस्टेक इज बीन मेड. सो व्हाट यू विल गेट एट द एंड इज IR will be equal to 1.5 IMPH minus j 0.866 IMPH. Here it should be minus sign inside bracket because here it is minus. This minus will come over here. Is that okay? So IR will be 1.5 IMPH minus j 0.866 IMPH. Then
taking IMPH common, you will get 1.5 minus G 0.866, convert it into polar form, you will get 1.732 angle minus 30. Okay, that is written over here. Angle का sign थोड़ा shift हो गया. Okay, and then 1.732 is nothing but root 3. Okay, so IR is line current, it is on left hand side, and on right hand side we are having phase currents. Okay, so we get IR is equal to root 3 IMPH angle minus 30. What this means is IL is root 3 times IPH, and it also means that for balanced 3-phase delta connected load, line current is root 3 times phase current, and it lags phase current by 30 degree. Okay, those who have seen video of star connected load, they must be remembering the equation which we have obtained for voltage relationship. The equation was VL is equal to, VL is equal to root 3 VPH angle 30. ये इक्वेशन हमें मिला था for star connected load. So line voltage is root 3 times phase voltage, and it leads phase voltage by 30 degree. But for delta connection, the equation of current is IL is equal to root 3 IPH angle minus 30. So line current lags phase current by angle of 30 degree. Okay, so this derivation is frequently asked for 7 or 8 marks in university exam. So you need to write this expression, but before that you need to draw the circuit diagram. Draw the neat circuit diagram which can be asked for 2 or 3 marks. Circuit diagram का weightage है, minimum 2 mark इसका weightage है. Okay, for a 7 mark expression. If expression is for 8 mark, this circuit diagram will have 3 marks. Okay, as per my knowledge. Okay, so first you need to draw this circuit diagram neatly. Don't worry about don't फील कि मुझे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आएगा, ये बहुत सिंपल सर्किट डायग्राम है. सो फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ दिस, then you need to write VL is equal to VPH from the observation, from the circuit diagram VL is equal to VPH, and then step by step you need to first apply Kirchhoff's current law, write IR plus IBR is equal to IRY, then take line current on one side, line current is IR, phase current is IRY and IBR, so it is kept on RHS, so IR is equal to IRY minus IBR. इस एक्सप्रेशन में ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस यू आर एबल टू राइट दिस स्टेप एंड इफ यू नो इक्वेशंस ऑफ IRY and IBR, then you will surely able to obtain the result of this expression. So step by step you should keep the things in mind. Okay, so once you get the equation of this, then just write those equations in rectangular form, substitute values, and at the end you will get IR is equal to root 3 times IPH angle minus 30 degree. That is IL is equal to root 3 IPH, and it lags the phase voltage by angle of 30 degree. Now along with this expression you need to conclude the expression with the phasor diagram. Okay, so ये आपका phasor diagram है. So इस phasor diagram का एक चीज आपको simple याद रखनी है. If you remember phasor diagram for star connection, what we had done is we had drawn 3 phasors of voltage. Voltage phasors हमने draw किए थे VR, VY, VB, 120 degree away from each other, and then we had extended these voltage phasors in opposite direction, if you remember, because उसमें क्या था, line voltage and phase voltage was different. Okay, so after this drawing these phase voltages, we had extended these phase voltages in opposite direction. For example, VY मैंने opposite direction में extend किया तो वो होगा minus VY. So VR और minus VY मिलके हमने यहाँ पे line voltage draw किया था VRY. ये स्टार कनेक्शन के लिए था, फॉर स्टार कनेक्शन. सो यहाँ पे हमें मिला था कि लाइन वोल्टेज लीड्स फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री. ओके, बट इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन चीज क्या है, फॉर डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज. लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आर सेम. सो एट द बिगिनिंग जो हम करते हैं, वी ड्रॉ 3 फेजर्स 120 डिग्री अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड ऑल दोज 3 फेजर्स रिप्रेजेंट लाइन वोल्टेज ऑल्सो एंड फेज वोल्टेज ऑल्सो. इसलिए उसका नेमिंग ही हम VRY, VYB, VBR करते हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन यू इट हियर. सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू इज you will draw this VRY, VYB and VBR. These 3 phasors 120 degree away from each other. Okay, and here these VRY is line voltage also and phase voltage also. All these 3 are line also and phase also. So voltage खत्म हो गए यहाँ पे. Okay, now we need to draw currents.
और करंट कैसे ड्रॉ करोगे, अभी यहाँ पे मैंने इंडक्टिव लोड एज्यूम किया है. सो फॉर इंडक्टिव लोड करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज. सो यहाँ पे मैंने आई आर वाई जो फेज करंट है वो वी आर वाई फेज वोल्टेज से कुछ डिग्रीज से लैग करता है, फाई एज्यूम किया है. ओके, सो वैसे 3 करंट्स आपको ड्रॉ करना है. आई आर वाई इज लैगिंग वी आर वाई बाय एंगल फाई, आई वाई बी इज लैगिंग वी वाई बी बाय एंगल फाई, एंड आई बी आर इज लैगिंग वी बी आर बाय एंगल फाई. सो फर्स्ट स्टेप इज सेम. फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको 3 फेज वोल्टेजेस ड्रॉ करना है, वी आर वाई, वी वाई बी एंड वी बी आर. सेकेंड स्टेप में आपको 3 फेज करंट्स ड्रॉ करना है, आई आर वाई, आई वाई बी, आई बी आर. एंड देन अभी का एक्सप्रेशन जो था उसमें हमने ये इक्वेशन यूज किया था, आई आर इज इक्वल टू आई आर वाई माइनस आई बी आर. दिस इक्वेशन आई हैव यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन. वी हैव यूज्ड इक्वेशन आई आर इज इक्वल टू आई आर वाई माइनस आई बी आर. ये इक्वेशन हमने यूज किया था, इसलिए इस फेजर डायग्राम में मैंने जो आई बी आर है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया माइनस आई बी आर ऑब्टेन करने के लिए, बिकॉज हियर वी नीड माइनस आई बी आर. आई आर वाई इज ऑलरेडी अवेलेबल ओवर हियर. सो बाय यूजिंग आई आर वाई एंड माइनस आई बी आर वी कैन ड्रॉ आई आर. आर यू गेटिंग? सो इन सेम फैशन आपको अगर कंप्लीट फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, जो हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ओके, सो अगर आपको कंप्लीट फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपको ये पूरे सब जो करंट फेजर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करने पड़ते हैं, और फिर आपको बाकी के 2 लाइन करंट जो है आई वाई आई बी मिल जाएंगे. बट फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो वी आर यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन आई आर वाई, आई बी आर एंड आई आर. दैट्स वाई हियर यू विल फाइंड फेजर डायग्राम जो है उसमें मैंने सिर्फ इतने ही फेजर्स प्लॉट किए. आई होप आपको ये फेजर डायग्राम समझ में आ गया. सो यू नीड टू कंक्लूड द एक्सप्रेशन बाय ड्रॉइंग दिस फेजर डायग्राम. Is that clear? I hope there are no queries. If there are any queries, feel free to comment or you can directly contact me. I'll be sharing my contact details at the end of this video. So अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने डिस्कस किए अभी तक हमने डिस्कस किया कि डेल्टा कनेक्शन क्या होता है. इट इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग एंड पॉइंट ऑफ वन फेज टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर. देन सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है डेल्टा कनेक्शन का, उसमें कौन कौन से करंट्स वोल्टेजेस दिखाने हैं. एंड देन फ्रॉम सर्किट डायग्राम हमें ऐसा समझ में आ गया है फॉर डेल्टा कनेक्शन VL इज इक्वल टू VPH, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज. ये स्टार कनेक्शन के कंप्लीटली अपोजिट है. स्टार कनेक्शन में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज. एंड देन वी हैव ऑल्सो डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट, एंड वी हैव अंडरस्टूड IL इज इक्वल टू √3 times IPH. एंड देन वी हैव ड्रॉन phasor diagram for representing that relationship between line current and phase current. Now let's understand power equations and power triangle. So जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 3 या 4 मार्क को, नहीं तो कभी कभी 6-7 मार्क को भी वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पावर्स फॉर 3 फेज सिस्टम एंड ड्रॉ पावर ट्रायंगल, एंड अलॉन्ग विद दैट दे विल गिव यू सम short numerical. So they can ask such a question for 7 mark also. So let's discuss power equations and power triangle. Now all of us already know that 3 phase power is 3 times single phase power. So P 3 phase is 3 times single phase. So single phase power का equation यहाँ पे है, single phase power is equal to VPH IPH cos phi. Now this is prerequisite, you need to know this. single phase power का equation अगर आपको पता नहीं है तो आप 3 phase power का equation कैसे लिखोगे, इसलिए single phase circuit का जो details मैंने share किए मेरे चैनल पे वो पहले देख लेना. Okay, so once you know the equation of single phase power, 3 phase power is only 3 times single phase power. So active power is P 3 phase is 3 times VPH IPH cos phi. Okay, so but for delta connection we know IPH is equal to IL by √3. हमने अभी derive किया IL is equal to √3 IPH. We have derived IL is equal to √3 IPH. What this means is IPH is equal to IL by √3. So we need to use this equation. IPH is equal to IL by √3 and VL is equal to VPH, and we are going to substitute these two equations in this equation to obtain this equation. Okay, so you can either obtain equation of active power in terms of phase values or in terms of line values. So phase values में उसका equation है 3 times VPH IPH cos phi, और line terms के values में उसका equation है √3 VL IL cos phi. Okay, and its unit is watt. Okay, then next is reactive power. So reactive power single phase के केस में reactive power का equation है VI sin phi.
ओके, सो यहाँ पे रिएक्टिव पावर ऑफ थ्री फेज इज 3 टाइम्स रिएक्टिव पावर ऑफ दैट सिंगल फेज, सो 3 टाइम्स वीपीएच आईपीएच साइन फाई, यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिखा है. And then by using fundamentals for delta connection we know IPH is equal to IL by root 3 and VL is equal to VPH. So by using these three equations, again if you substitute those two equations in this, then you will obtain Q3 phase is root 3 times VL IL sin phi. Again unit is VAR. And third type of power is apparent power. So apparent power is VPH IPH for single phase, for three phase it will become 3 times. Again you can write it in terms of line voltage, line values also. So ये जो power के equations है, these are same for both star and delta. Whether you are writing it for star and delta, equations or power are going to remain same. Okay, you can either remember equations in form of phase values, okay, or you can remember equations in form of line values. But if you understand neatly, जो equation हमें star connection के लिए मिले थे power equation, same equations हमें delta connection में मिले हैं, because root 3 factor जो है वो common है. स्टार कनेक्शन में वो रूट 3 फैक्टर वोल्टेजेस के लिए आता है, डेल्टा कनेक्शन में वो रूट 3 फैक्टर करंट के लिए आता है, बस एज सिंपल एज दैट. एंड देन इफ यू नो द पावर इक्वेशंस, आई होप ड्राइंग ए पावर ट्रायंगल इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क. पावर ट्रायंगल क्या होता है? इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर इज बेस ऑफ द ट्रायंगल इज एक्टिव पावर, हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज रिएक्टिव पावर एंड हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल इज एपरेंट पावर. सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल वेयर इज फाई जो है इट इज एंगल बिटवीन active power and apparent power. And if they ask you definition of power factor also, then definition of power factor is it is factor by which apparent power should be multiplied so as to get active power, because P का equation क्या है? S cos phi और S का value VI है. Okay, so along with the equation of power and power triangle, they may also ask you the power factor. So power factor is cosine of angle between voltage and current, and it is also defined as factor by which apparent power should be multiplied so as to obtain the active power. So I hope you have understood equations of power, equations of voltage, equations of current for delta connection. Now let's solve two numericals. Okay, it is quite easy. So numerical is given to us, 3 identical impedances each of 6 plus j8 ohm are connected in delta across 400 volt 50 hertz AC supply. Okay, determine line current, power factor, active power and reactive power. पहली चीज आपके दिमाग में डाल लो, कौन सा भी न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं रहता. बी कॉन्फिडेंट. अगर आपने स्टडी किया है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा. द मोर द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स यू सॉल्व, मोर पोटेंशियल यू विल डेवलप टू फेस एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. सो आपको अगर कॉन्फिडेंटली पेपर को जाना है, फेस करना है, तो इधर जो मैं 2 न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ उसको स्टिक रह के कुछ नहीं होगा. आपको रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक देख के बाकी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे. ओके, सो न्यूमेरिकल देख के या पढ़ के कभी घबराना नहीं आपको. ओके, इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर you will be able to solve the numerical. So let's write down given. So for given this numerical, VL is connection is delta. Okay, connection is delta. So मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर दिया है, VL is equal to VPH is equal to 400 volt. Okay, अगर वोल्टेज की वैल्यू 380 के ऊपर होगी ना, न्यूमेरिकल में अगर वोल्टेज की वैल्यू 380 के ऊपर दिए फॉर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो वो लाइन वोल्टेज होता है. ये अलग से मेंशन नहीं करना है, वहां पे मेंशन नहीं करते न्यूमेरिकल में कि वेदर इट इज लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज. अगर वैल्यू 230, 240, 200 है तो वो फेज वोल्टेज होता है. अगर वैल्यू 400, 415, 440 है तो वो लाइन वोल्टेज होता है. ये बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आप डाल लेना. सो VL इज इक्वल टू VPH इज इक्वल टू 400 वोल्ट एज इट इज डेल्टा कनेक्शन. फ्रीक्वेंसी इज गिवन, इट इज 50 हर्ट्ज. इंपीडेंस पर फेज इज गिवन, इट इज 6 plus j8. सो इन पोलर फॉर्म इमीडिएटली यू नीड टू नोट इन पोलर फॉर्म. सो पोलर फॉर्म में आपको कैलकुलेटर पे यू कैन कन्वर्ट रेक्टेंगुलर इनटू पोलर, और अदर वे राउंड आपको पता है पोलर फॉर्म का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट. ओके, सो 6 स्क्वायर इज 36. ओके, अगेन आई एम नोटिंग 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, 36 प्लस 64 इज 100 एंड 100 का स्क्वायर रूट क्या है? 10. सो आपको अगर मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करना है, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, तो आपको मैन्युअली भी आना चाहिए. एंड मैन्युअल कैलकुलेशन इज इजी इफ योर नंबर्स व्हिच दे हैव गिवन आर क्वाइट familiar to you. Okay, so 6 square is 36 plus 8 square is 64, उसका एडिशन, उसका स्क्वायर रूट लो, आपको 10 मिल जाएगा. और phi क्या होता है? phi is tan inverse of b by a. phi क्या होता है? tan inverse of b by a. b is what? 8, a is 6. tan inverse of 8 by 6 if you do, you will get 53.13. Okay, so once you write द गिवन अगर आपने अच्छे से लिखे और आपको अगर कनेक्शन पता है कौन सा है और आपको उस कनेक्शन के फंडामेंटल इक्वेशंस पता है, तभी आपको वो न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करने को जमेगा.
Okay, so knowing fundamental is most important. Okay, and if you are going by mugging up the things, then it will not help you. It is not going to help you. Okay, so for स्टार कनेक्शन आपको सिंपल दिमाग में रखना है. स्टार कनेक्शन का डायग्राम आपके दिमाग में अगर जो करंट लाइन में से फ्लो होने वाला है वही करंट फेज में से फ्लो होने वाला है. सो लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट फॉर स्टार कनेक्शन. ये दिमाग में आपके रख लो अभी, नहीं तो सर्किट डायग्राम आपके सामने रखो. और स्टार कनेक्शन के लिए VL इज इक्वल टू √3 VPH है. डेल्टा उसके अपोजिट है. इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन VL इज इक्वल टू VPH एंड IL इज इक्वल टू √3 IPH. बस अगर ये चार इक्वेशन आपको दिमाग में फिक्स है, देन देयर इज, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. ओके, सो फर्स्ट गिवन अच्छे से लिखना है. वंस यू राइट द गिवन, next is we know for a delta connection VL is equal to VPH and IL is equal to √3 IPH. that's what I told you right now. और एक चीज आपको मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि जो इंपीडेंस होता है वो हमेशा हम फेज में कनेक्ट करते हैं. सो IPH is equal to VPH by ZPH. most of the students I have seen while paper assessment they write इक्वेशन, इंपीडेंस का इक्वेशन लिखते समय वो गलती से लाइन वैल्यूज ले लेते हैं, मीन्स VL by IL. इंपीडेंस हम कभी भी लाइन में कनेक्ट करते नहीं. सेम टॉपिक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन ऑल्सो. ओके, सो लाइन वोल्टेजेस और लाइन करंट के वैल्यू कभी भी आप इक्वेशन में लेने नहीं है. ओके, इंपीडेंस के केस में यू ऑलवेज नीड टू कंसिडर फेज वैल्यूज. सो फॉर गिवन circuit as it is delta connected, we'll write the standard equations for delta connection, and once we write the standard equations of delta connection, therefore we know IPH is equal to VPH by ZPH. so VPH का वैल्यू क्या है? VPH is nothing but VL, so it is 400 angle 0. ZPH का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, so it is 10 angle 53.13. so ultimately you will get IPH is equal to 40 angle minus 53.13. in case of division we divide magnitude, we subtract angle. so 400 divided by 10 is 40 and 0 minus 53.13 is minus 53.13. Okay, so once you get the phase current, it is quite easy to calculate the line current, because for delta connection line current is √3 times phase current. so √3 times 40 आपको आप अगर करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 69.28. so it is pretty easy. Okay, so पहला जो चीज़ था हमने वो कैलकुलेट कर लिया. पहले हमें पूछा गया था कैलकुलेट लाइन करंट, सो वो हमने सॉल्व कर लिया है. फर्स्ट इट इज आस्क्ड कैलकुलेट लाइन करंट, बट लाइन करंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें फेज इंपीडेंस कैलकुलेट करना पड़ता है. फेज इंपीडेंस से हमें फेज करंट कैलकुलेट करना पड़ता है. अगर आपको वो पता है तो ही आपको लाइन करंट मिलेगा. एज सिंपल एज दैट. ओके, वंस वी हैव ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन करंट, देन दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर. तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इज cos phi. ओके, और फाई का वैल्यू आपको कहाँ पे मिलेगा? फाई का वैल्यू आपको करंट का फाई का वैल्यू कंसिडर करना है. यू डोंट नीड टू कंसिडर फाई वैल्यू ऑफ इंपीडेंस. ओके, यू नीड टू कंसिडर फाई वैल्यू ऑफ करंट. सो इट इज minus 53.13. So next step is power factor. So power factor is cos phi is equal to cos of minus 53.13. So it is 0.6 lagging. Why lagging? Because angle of current is negative. ये अगर एंगल पॉजिटिव होता तो हम लीडिंग लिखते, यहाँ पे वो नेगेटिव है इसलिए हमने लैगिंग लिखा है. इस वर्ड को मार्क्स है. ओके, so once we know the power factor, next we want to calculate active power. so active power for three phases 3 times VPH IPH cos phi. so सिर्फ अभी आपको वोल्टेज और करंट के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. so 3 times 400 into 40 into 0.6. so आपको एक्टिव पावर का आंसर मिल जाएगा. it is 28,800 watt. okay, then they have asked us to calculate reactive power. ये तीन कर लिए हमने, लाइन करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर. नेक्स्ट इज रिएक्टिव पावर. रिएक्टिव पावर का इक्वेशन क्या है? रिएक्टिव पावर फॉर 3 phases 3 times that of single phase. so 3 times VPH IPH sin phi. so 3 times VPH IPH sin phi if you do, then you will get 3 into 400 into 40 into sin of 53.13. so it is nothing but 38,399.94 volt ampere reactive. इक्वेशन आपने लिखे, इक्वेशन लिखना है, सब्स्टिट्यूशन दिखाना है, फिर आंसर लिखना है, यूनिट भी लिखना है. ओके, इसमें से एक भी स्टेप आप स्किप कर देते हो तो आप गलती कर सकते हो. सो मेक श्योर यू राइट द इक्वेशन ऑफ पावर, show the substitution, and then write the answer along with the unit. so I hope you have understood this numerical. Numericals of 3 phase are pretty easy if you know the fundamentals. okay, now let's understand next numerical. next numerical में क्या दिया है? 3 similar coils each having resistance of 5 ohm. let's write given. given is R is equal to 5 ohm and inductance of 0.02 Henry. ओके, R इज 5 ohm, इंडक्टेंस ऑफ 0.02. जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं. आर कनेक्टेड इन डेल्टा, डेल्टा कनेक्शन है. हैविंग फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इज सेम फॉर डेल्टा कनेक्शन एंड इट्स वैल्यू इन गिवन न्यूमेरिकल इज 440 वोल्ट. आर कनेक्टेड इन डेल्टा
across 3 phase 450 volt 50 hertz supply. So frequency is given. मेरे साथ सॉल्व करो ये न्यूमेरिकल. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल. यू नीड टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल इन योर notebook and type the answer in comment section. Okay, so these are given thing. Calculate current drawn and power consumed. ये 2008 के कोर्स में पूछा था. ओके, कैलकुलेट करंट ड्रॉन एंड पावर कंज्यूम. तो आप कैसे करंट ड्रॉन कैलकुलेट करोगे? फॉर कैलकुलेटिंग करंट ड्रॉन आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इंपीडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग दीज टू, बाय यूजिंग आर एंड एल. सी दिया नहीं है, मतलब इंपीडेंस का बेसिक जो इक्वेशन है, हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे इंपीडेंस का? जेड पी एच इज इक्वल टू आर पी एच प्लस जे एक्स एल पी एच, because there is no XC, there is no capacitor. So first you will calculate impedance by using this equation. You will convert it into polar form. Polar form में immediately उसको convert करना है. So आपको ZPH mod और उसका एंगल फाई मिल जाएगा. So पहला स्टेप मैंने आपको बोल दिया कि आपको impedance कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्यों impedance कैलकुलेट करना है? बिकॉज हमें करंट पूछा है. और वैसे भी कौन से भी सिंगल फेज और थ्री फेज के न्यूमेरिकल को फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू कैलकुलेट इंपीडेंस, वेदर इट इज सिंगल फेज सर्किट और थ्री फेज सर्किट. इफ इंपीडेंस इज नॉट रेडीली गिवन यू नीड टू कैलकुलेट इंपीडेंस. सो कैलकुलेट करंट बोला है तो आपको करंट कैलकुलेट करना है, तो इंपीडेंस पता होना चाहिए बिकॉज वोल्टेज पता है. सो करंट कैसे कैलकुलेट करोगे? IPH जो है इट इज व्हाट? VPH बाय ZPH. ओके, सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन कैलकुलेट IPH. अभी यहाँ पे करंट ड्रॉन पूछा है, तो करंट ड्रॉ कौन करेगा? लोड ड्रॉ करेगा. और वो किधर जाए, किधर से ड्रॉ करेगा? वो लाइन में से ड्रॉ करेगा. दैट मीन्स आपको लाइन करंट कैलकुलेट करना है. सो IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स IPH. सो वंस यू गेट द IPH मल्टीप्लाइड बाय √3 यू विल गेट IL. एज सिंपल एज दैट. ओके, सो पहले इंपीडेंस कैलकुलेट करो, फिर IPH कैलकुलेट करो एंड देन कैलकुलेट IL. दैट इज योर सोल्यूशन ऑफ first thing that they have asked, calculate current drop. Second is calculate power consumed. So power consumed बोला मतलब it is active power. Power consumed means active power. Okay, so active power का इक्वेशन क्या है थ्री फेज में? It is 3 times VPH IPH cos phi. So use this equation, or you can use the equation in terms of line values also. It is √3 VL IL cos phi. Any of these two equations you can use if they have asked you power consumed or active power. Use any of these equation, you will get the answer. And note the complete numerical in your notebook and also comment the answer in comment section. मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, even though I think most of them are also not watching full video. So I feel very pity of them, but it's fine. We need to accept the people and situation as they are. Okay, it is completely okay. If you don't watch, I'll see you next time. So now let's understand how to draw complete phasor diagram. कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ बोलते हैं ड्रॉ कंप्लीट फेजर डायग्राम एंड दे आस्क सच अ क्वेश्चन फॉर 7-8 मार्क्स, बिकॉज ड्रॉइंग कंप्लीट फेजर डायग्राम इज नॉट ए जोक. ओके, सो जैसे मैंने स्टार कनेक्शन के लिए किया था, इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन हमने क्या किया था? पहले हमने VR VY VB ऐसे ड्रॉ किए थे, अगर आपको याद है, स्टार कनेक्शन के लिए 120 डिग्री अवे फ्रॉम ईच अदर. एंड आफ्टर ड्रॉइंग VR VY VB वी हैड एक्सटेंडेड दिस all 3 voltage phasors which represent phase voltage in opposite direction. So हमें उससे -VY -VR और -VB मिल गया था. And then by using these phase voltage phasors we had plotted line voltages. So यहाँ पे अगर आप VR एंड -VY आप यूज़ करते हो तो आपको जो रिजल्टेंट फेजर रहेगा वो VRY रहेगा. क्यों? बिकॉज VRY इज VR -VY. So the thing is, for star connection we had extended voltage phasors in opposite direction, but for delta connection whatever is the line voltage same is the phase voltage. So we don't need to extend voltage phasors in opposite direction, we need to extend current phasors in opposite direction. So first step जो है for drawing a phasor diagram is draw phasor VRY, VYB and VBR 120 degree away from each other. Okay, once you are over with this, here we are done with the voltage, phase voltages and line voltages. So next is as per the requirement of the load, आपका लोड कौन सा है उसके ऊपर से हमें current phases draw करना है. Okay, so VRY it is phase voltage of R phase.
सो आर फेज का जो करंट है आई आर वाई, उसका फेजर लैग करेगा, लीड करेगा, इन फेज रहेगा. इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ द लोड. So in previous example we had discussed, in both of the example we had discussed inductive type of the load. So in this phasor diagram we are going to consider inductive load, and hence I have drawn IRY lagging VRY by some angle. Similarly IYB lagging VYB and IBR lagging VBR. I request all of you to draw this phasor diagram with me. ओके, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेजर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. फेजर डायग्राम डायरेक्टली अगर आप पूरा फेजर डायग्राम देखते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे ड्रॉ किया है. सो यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. सो पहले हमने वोल्टेज फेजेस ड्रॉ किए, वी आर वाई, वी वाई बी, वी बी आर, एंड देन बाय अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ द लोड वी हैव ड्रॉन 3 करंट फेजर्स, आई आर वाई, आई वाई बी एंड आई बी आर. इफ लोड इज resistive, then all these 3 current phasors will overlap the voltage phasors. If load is capacitive, then all these 3 current phasors will lead the voltage phasors, respective voltage phasors. But here we are assuming inductive load, so IRY is lagging VRY, IYB is lagging VYB and IBR is lagging VBR by angle phi. So कौन से भी एक current phasor के इधर आपको ये angle दिखा देना है. Okay, so I have shown it near IRY. So IRY lags VR by angle phi. इसके आगे का स्टेप क्या है, यहाँ पे क्या क्या खत्म हो गया. यहाँ पे वी हैव फिनिश्ड विद ड्राइंग VL, VPH एंड IPH. ये ड्रॉ कर लिया अभी हमने. अभी हमें क्या ऑब्टेन करना है, वी नीड टू ड्रॉ IL. सो IL कैसा ऑब्टेन करोगे, जैसे एक्सप्रेशन ने हमने किया था. फॉर द एक्सप्रेशन व्हाट वी डिड इज वी हैड रिटन, फॉर ऑब्टेनिंग द एक्सप्रेशन वी हैड रिटन IR इज इक्वल टू IRY माइनस IBR by applying KCL at node R. So here we are having IRY but we don't have minus IBR. So what will be next step? Next step is extending all the current phasors in opposite direction. Okay, so I had extended IRY in opposite direction, it becomes minus IRY. IYB in opposite direction, it becomes minus IYB, and IBR in opposite direction, it becomes minus IBR. As simple as that. Okay, so now by using this current phasors, we need to obtain, these are phase currents, these all are phase currents. By using these phase current phasors we need to obtain line current. So by using IRY and minus IBR we can obtain IR. फिर से मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. IR इज इक्वल टू IRY माइनस IBR, ये इक्वेशन है. सो IRY ये फेजर हो गया आपका, IB माइनस IBR ये फेजर हो गया. So by using these two we'll construct a parallelogram. ये parallelogram हो गया, and diagonal of the parallelogram if you draw it will represent IR. So this is your IR phasor. Okay, resultant is obtained by constructing parallelogram. So IRY minus IBR is IR. Is that okay? In same fashion we'll obtain other 2 line currents, that is IY and IB. ओके, सो अभी अगर आप अच्छे से इसको एनालाइज करोगे तो आपको समझेगा IRY और माइनस IBR ये दोनों जो है, IRY एंड माइनस IBR, इन दोनों में R कॉमन है. थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं, IRY एंड IBR ये दोनों जो करंट्स है इसमें R कॉमन है, सो उनका रिजल्टेंट IR हो जाता है. ओके, सो वैसे यहाँ पे IBR और माइनस IYB इसमें B कॉमन है, तो यहाँ का रिजल्टेंट करंट जो आएगा आफ्टर प्लॉटिंग पैरेललोग्राम एंड डायगोनल, तो उसका आंसर रहेगा IB. ओके, सो यू विल फाइंड हियर फ्रॉम एक्सप्रेशन वी हैव गॉट दैट लाइन करंट लैग्स फेज करंट बाय 30 डिग्री. सो वहाँ पे 30 डिग्री दिखा दिया. सो नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ ऑल द 3 पैरेललोग्राम्स, as simple as that, and then we obtain the currents IR, IY, IB. Is that clear? So this is complete phasor diagram for 3-phase balanced delta connected inductive load, and show that all the phasors are rotating in anti-clockwise direction. Okay, 3-phase delta connected, ये गलती कर दिया मैंने, it should be delta. So it is 3-phase delta connected inductive load phasor diagram. I hope there is no doubt. क्विकली मैं आपको रिवाइज करता हूं कैसा ड्रॉ किया हमने फेजर डायग्राम. फर्स्ट वी हैड ड्रॉन 3 फेज वोल्टेजेस, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज फॉर डेल्टा कनेक्शन. देन वी हैड ड्रॉन 3 फेज करंट्स,
IRY, IYB, IBR. These phase currents are dependent on type of load. रेजिस्टिव लोड होगा तो इन फेज रहेंगे, इंडक्टिव लोड होगा तो लैग करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे दिखा है, कैपेसिटिव लोड होगा तो लीड करेंगे. ओके, देन एक्सटेंड ऑल द थ्री फेजर करंट फेजर्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देन कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम्स बाय यूजिंग द इक्वेशन. जैसे IR का इक्वेशन है IRY माइनस IBR, सो एक पैरेललोग्राम हो गया. दूसरा इक्वेशन होगा IY का इक्वेशन होगा IYB माइनस IRY, सो उसका ये पैरेललोग्राम होगा. और तीसरा इक्वेशन होगा IBR माइनस IRY माइनस IYB, सो उसका ये तीसरा पैरेललोग्राम हुआ. शो ऑल द फेजर्स आर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस इज व्हाट इज फेजर डायग्राम फॉर थ्री फेज बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड इंडक्टिव लोड. सो इन दिस complete session, what we have understood is, we have understood what is delta connection. Okay, then we have understood what is relationship between line voltage and phase voltage for delta connection, and we have also drawn the circuit diagram. सो आई होप ये सब पॉइंट्स हमने कवर किए. डेल्टा कनेक्शन क्या होता है? इट इज ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग एंड पॉइंट ऑफ वन फेज टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर. रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज वी हैव ऑब्टेन VL इज इक्वल टू VPH. देन डेरिवेशन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट वी हैव ऑब्टेन IL इज इक्वल टू √3 IPH एंगल -30. देन वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ पावर्स एंड पावर ट्रायंगल, एंड देन we have also solved two numericals or two examples based on the delta connection. Okay, so I hope you have understood contents of this video, and I request all of you to please subscribe to my channel, and you may also follow me on Instagram. I do some photography related work as it is one of my other passions. And most importantly, आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वो हम ज़रूर उसके ऊपर ध्यान देंगे और सॉल्व करेंगे. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीपल फाइंड इट टीडियस बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस द एग्जाम्पल्स. सो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपके एग्जाम्पल्स अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो. ओके, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, और जितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उतना एग्जाम में आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेजर डायग्राम को आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा 2-3 बार. एक बार देख के ड्रॉ करो और फिर बिना देखे फेजर डायग्राम स्टेप वाइज ड्रॉ करना. ओके, ड्राइंग अ फेजर डायग्राम इज स्टेप वाइज थिंग. ओके, आपको डायरेक्टली झोल करके ड्रॉ नहीं करना. ओके, आपको कंप्लीटली ड्रॉ करना है वन आफ्टर अदर. So I thank all of you for watching this video completely. Share this video with your friends. Subscribe to my channel. Stay happy, stay home, stay safe. Thanks a lot. Enjoy.